So now we are starting the joints. Before joints, we take one more important topic about bones. Bone में just classification है. Bones में types according to their shape, according to strength. So there are two types. First is compact bone, and another is spongy bone. तो अब देखिए ये कैसे बनेंगे spongy bone और contact bone. Let's say this is our bone. We know one head, two head, and remaining portion. This is our bone. Then अब इसमें क्या होगा देखिए. There are two portions. One is this and this. There are two parts. First is the solid calcium part, solid calcium area. This some portion inside bone is calcium and some portion is liquid matrix. Done. ये portion क्या है? This is the calcium portion, hard portion. This is hard portion. So this bone is called compact bone. This portion, and this is called spongy bone. Mark it. Okay. This part is compact bone. This is compact bone. और ये जो बाकी का बचा हुआ है ये वाला जो एरिया है ये होता है हमारा ये ऊपर वाला जिसमें रेड बोन मैरो आता है और जो नीचे वाला होता है ये नीचे वाला these are the ends epiphyses. इसको इंक्लूड करते हैं हम. These are included in normal spongy bone. These are spongy bone. Spongy bone. Okay, done. And inside is also a spongy bone. This is also spongy bone. This is also included in spongy. ये वाला जो एरिया है सारा ये भी हमारा स्पॉन्जी बोन के अंदर ही काउंट होता है. डन. सो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. जो स्पॉन्जी बोन है उसमें एक पैटर्न अलग मिलता है हमें और एंड कॉम्पैक्ट बोन में पैटर्न नहीं मिलता है. देयर आर टू पार्ट्स. वी नो दिस इज रेड बोन मैरो. हियर इज रेड बोन मैरो and it has function of erythropoiesis and hemopoiesis basically. Hemopoiesis means formation of all blood cells, WBC, RBC, all platelets. Hemopoiesis. Done. And this is white bone marrow inside this spongy bone. Inside is white bone marrow. This portion is white. ये जो है ये inside है जो spongy bone का inside इसको बोलते हैं हम white bone marrow. White bone marrow जिसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे it is only storage for fat storage. No any function. Done.
these are two parts. अब बात ये आती है स्पॉन्जी और कैल्सरस बोन पे, इनका फंक्शन है। देख, दिस इज कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन, इसको स्पॉन्जी बोन का अलग नाम और होता है, कैंसिलस बोन बोलते हैं, कैल्सरस बोन, कैल्सरस बोन। डन, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैल्सरस बोन, इट इज कॉल्ड कैल्सिनस। फर्स्ट चेंज कर लेते हैं, कैल्सिनस, कैल्सिनस, कैल्सिनस बोन, लिनस, एक मिनट, कैल्सिलिनस, लिनस वो, डन, कैल्सिलिनस बोन बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैल्सिनस। So अब there are some differences in compact bone and spongy bone. So अब इसको form करते हैं. Then we make a table for this. So first is compact bone, compact bone one side, and one side is spongy bone. पहले तो हमने देख लिया कौन सी बोन कहाँ मिलती है, तो हमें पता है हड्डी में. The outer strong part is compact and another inside is spongy. Done. This we know. अब इसमें क्या है डिफरेंस देखिए, जो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, वी ड्रॉ, सेंटर में हमारे पास वेसल्स होती हैं जिसको हम सेंट्रल वेना बोलते हैं, एंड अराउंड देयर आर मैनी बोन सेल्स. बोन सेल्स कौन सी होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टोब्लास्ट फॉर्म अ रिंग टाइप पैटर्न इस तरह से आउटसाइड, मैनी रिंग्स फॉर्म like this one part, this is called हार्वेशन कैनाल सिस्टम वन, एंड ऐसे अदर भी होंगे. दिस इज पैटर्न ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, मैनी हार्वेशन कैनाल सिस्टम कनेक्टेड होते हैं. ये जो नॉर्मल बोन का पैटर्न पढ़ते हो कॉम्पैक्ट बोन का पढ़ते हैं 11th-12th में. देन दिस पैटर्न ऑफ हार्वेशन कैनाल सिस्टम. आप इसमें देखिए मार्किंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल एंड वेसल्स, दिस इज सेंट्रल कैनाल. देन these are vessels, blood vessels for blood supply of bone, and there are many connections between them. These connection between two canals, two systems is called canal of Volksman, Volksman canal, the Volksman canal. ये O है, the Volksman canal, and these marking is called canaliculae. These are called canaliculae. जिस स्पेस में these are the cells of the basically layers में arranges is canaliculae is called layers. जो लेयर पैटर्न हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल पैटर्न इसको बोलते हैं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स उसको बोलते हैं कैनालिकुली अरेंजमेंट. डन. अब दीज आर विच किसका अरेंजमेंट है? बेसिकली सेल पैटर्न ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट अरेंजमेंट, ऑस्टियोसाइट्स का, सेल बोन सेल्स का.
osteocytes, osteocytes and osteoblast. Then इनका पैटर्न होता है. अब these cells also arrange in a space. These cells also arrange in space. Let's say this is one cell. This arrangement is canaliculi, and in canaliculi में some bone cells is present like this. Let's say this is one bone cell. Done. So it is present in some space like this. This is space. This space is called lacunae. Lacunae. Lacunae is called lacunae is space for cell, space for bone cell. It's called space for bone cell. Done. For bone cell is called lacunae. So यहाँ पे there are many lacunae present. Done. This complete ring is called, this one system, this is one, is called Harvation canal system. Harvation canal system. Done. This is pattern of compact bones. So there are many different. Now come to the spongy bone. Spongy bone में कैसे रहता है? There is no Harvation canal system, osteon, all, and this Harvation canal system also called osteon. One name is also called osteon. Or OS osteon. Then TEON osteon. Osteon. क्या होता है? This is pattern of compact bone. There is no arrangement pattern in Harvation canal system like in spongy bone. There is no pattern. इसमें क्या होगा? First we draw a box. इसमें इस सबसे पैटर्न मिलता है. देखिए, remember there are many the matrix part is called spongy bone. The matrix part is called spongy bone. This matrix, whole matrix is called spongy bone. So there are some projections of compact bone in the spongy bone, which is called trabeculae. Actually they are part of hard bone, but there are some projections. So these projections are called trabeculae. So we draw trabeculae first like this. Many trabeculae present. Done. In the spongy bone. And में cells भी होंगी. Which cells? Osteocytes, obviously. Done. These are trabeculae. Then we have some fibers here. Fibers. Fibers. Done. And some cells, other cells, bone. Obviously cells तो होंगी यहाँ पे भी. ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं होंगी. Some bone cells like हमारे पास कौन सा सकती है? Stem cells हो सकती है जो बनाती है पिक्चर में. Storage cells हो सकती हैं. Some we can include like here some bone cells. Then osteocytes को include कर लेते हैं. Some osteocytes also present here. And some other cells, storage cells. Fat storage भी तो है यहाँ पे, तो fat storage भी मिल सकती है यहाँ पे. So we can draw some fat like this. And matrix overall present ये water like content तो हमें हर जगह मिलेगी. Done. So we can name out. These are called trabeculae. Trabeculae. Then these are called cells. Osteocytes. These are fibers, protein fibers. And these are some fat molecule. Fat molecule.
Done. So this is pattern of compact bone and spongy bone. These are pattern. Compact bone and spongy bone. There are two parts of the bone. One is soft, which is called spongy bone, and also called calcaneous bone. Cartilaginous bone. And one is hard, which is called compact bone. Compact bone के अंदर हमें हार्वेशन कैनाल सिस्टम मिलेगा, ऑस्टियन मिलेगा, कैनालिकुले, लिक्विनाई, all these things. And स्पॉन्जी बोन में हमें क्या मिलेगा? ट्रेबिकुले and some fibers. इधर हमें ट्रेबिकुले वगैरह मिलेंगे and no हार्वेशन कैनाल सिस्टम present here. So this is a pattern. So we can here write differences. We found part में लिख सकते हैं, it is outer shaft part. Shaft part. अगर उसमें इसमें इंक्लूड करें कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इंक्लूड करें तो हम इसे दीज आर कॉम्पैक्ट बोन पार्ट. इधर क्या लिख सकते हैं हम? ends of bone, the extremity is basically epiphysis and inner area of the shaft. Inner area of shaft. Then include में इसमें we found हार्वेशन कैनाल सिस्टम, हार्वेशन कैनाल सिस्टम फाउंड यहाँ पे मिलेगा हमें. Here there is no हार्वेशन कैनाल सिस्टम. No हार्वेशन कैनाल system found. Done. No हार्वेशन कैनाल system found here. And here trabeculae found, but trabeculae are not found here in compact bone. They found in spongy bone. Trabeculae just extensions हैं solid matrix की. Trabeculae found here, trabeculae not found. Trabeculae not found. Not found. Then it is hard. ये तो normal point है. It is hard and it is generally soft. It is slightly soft. So these are the differences of the compact bone and the spongy bone. Their diagram also important. And their differences. Done. Now we start in the joints. These are the portion we have done. Now we starting the joints. Joints. First, what are joints? Joints are articulation between two bones. What is articulation? Articulation is a special type of connection between two bones in which they can move according to joint. लिख सकते हैं हम. It is connection. It is articulation. Articulation of bones at certain places. At places for movements. Movements के लिए present होते हैं joints. Done. Then articulation meaning a type of connections, a special type of connection. देखिए attachment. There is difference between attachment and articulation. We cannot say this. They are attached bones. Let's say humerus and scapula are not attached. They are articulate. Means if attached means they are completely fixed, so they cannot move. In articulation, they can move. Special type of connection in which
they can move. अब इस कनेक्शन में हेल्प कौन करेगा? फॉर कनेक्शन वी हैव लिगामेंट्स, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. फॉर कनेक्शन वी हैव लिगामेंट्स like tendons, so they are ligament. Tendons क्या होते हैं? Muscle to bone and they are bone to bone. Fibrous band, which connect two or more bones at joint. Done. So start करते हैं types of joint. So types में there are three types of joint. One is fibrous joint. Other is cartilaginous joint. And then synovial joint. Synovial joint. Done. So we start from the first fibrous joint. पहले मोटी देख लेते हैं क्या है. They are immovable joint. They are not much movable. They are immovable. Immovable joint. Done. They are slightly movable. Are slightly movable. Not much movable. And they are very removable. Means they are joints. Just like example, shoulder joint, hip joint are example of synovial joint. They show massive movement. They are movable. Done. 3 कैटेगरी जॉइंट बन गई. अब देखते हैं फाइबरस जॉइंट से स्टार्ट करते हैं. फाइबरस जॉइंट में होगा क्या? बेसिकली फाइबर्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे कनेक्शन के लिए, जिस वजह से बोन कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी. मतलब बोन फिक्सिंग हो जाएगी पूरी और वो मूव नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा. फाइबर्स बेसिकली वाइट फाइबर्स, हम आगे पढ़ेंगे. फाइबर्स में भी वाइट फाइबर्स प्रेजेंट between them. Then fibers, they are fibers joint. अब इसमें देखते हैं टाइप्स. तो सबसे पहले हमारे पास होगा यहाँ पे, ए से स्टार्ट करते हैं. सुचरल जॉइंट. Sutural joint. Sutural joint means sutures present. Like we know the skull have many projections. So these are the sutures. Remember, these are the sutures present in skull. These are called sutures, which connect the two skull bones. These are sutures. That this type of suture, these are called fibrous joint. This, remember, this skull are not move. These are not joint movable. We cannot move the skull bones. We cannot move skull bones. So these are immovable fibrous joint. So यहाँ पे हमारे पास different type of sutures होते हैं. सबसे पहले हमारे पास होता है, one category is plain synovial suture. इसमें इंक्लूड करते हैं. इसमें भी हमारे पास कई सारे होते हैं.
One is plain sutural joint. Sutural joint. Then इसमें आते हैं हमारे पास बेसिकली वो suture जो plain है. This suture is like this. Let's say this is bone. This is one bone. Let's say this is one bone. Done. And this is another bone. So there is plain suture present between them. Like this. Plain suture present होगा यहाँ पे. This is called plain suture. Plain है ना ये. This is called plain suture. Plain sutural joint. Plain है ना completely बीच में से. तो articulation is this called plain suture. Example क्या होगा इसमें? Example लेते हैं. Examples important है. Internasal suture. Internasal suture between two nasal bones. These are present here. Two nasal bones. And intermaxillary bone between two maxillary bones. This side and this side. Intermaxillary bone. अब यहाँ आगे देखेंगे sutures को. Between two nasal bone. Two nasal bone. Between two maxilla bone. Maxilla bone. Then after this, another type of sutural joint is serrate suture. Serrate sutural joint. इसमें आते हैं it is like RE like this. X जो होती है इसमें क्या होता है? This joint is present like this suture. It is like this. Two bones के बीच में. Let's say this is one bone. And this is another bone. So this is serrate suture. Serrate suture. इनकी definition नहीं आती, इनके आते हैं examples. So we have to learn example and we can just draw diagram and this is enough for any to differentiate any suture. इसमें example हो जाएगा हमारा. This is example of sagittal suture. ये important है, देखते हैं कैसे हो. Sagittal suture. Sagittal suture. Suture तो हमने देखे थे. तो sagittal suture is like this. This is sagittal suture. ये जो ऊपर से आ रहा है ना, this is sagittal suture. ये जो है, this is sagittal. ये पूरा आगे से आ रहा है ना, दो पैराइटल बोन्स के बीच में होता है एक्चुअली. सर में लेटरल साइड में पैराइटल बोन्स है तो उनके बीच में sagittal suture. Then इसको बोलते हैं sagittal suture. Next example is denticulate suture. Denticulate suture. It has like this pattern.
It has fixing pattern. All these are fixing like this. It is somewhat like this pattern, box like. Two bones are fixing one in one another. Then this is one bone and this is another bone. Two bones just fix over. It's called the denticulate suture. This is called denticulate suture. Denticulate suture. Then and the example of this, is we can include, it is like tooth like. This is tooth like arrangement. टूथ लाइक भी बोलते हैं इसका पैटर्न हो जाएगा हमारा it will include lambdoid suture. Lambdoid suture. And what is lambdoid suture? Wait. Lambdoid suture. Lambdoid suture is like this. This is lambdoid suture. Wait. ठीक है तो lambdoid suture ये रहा ये रहा बस lambdoid suture देखिए this is lambdoid suture. This is, it is present in parietal and occipital bone. This is lambdoid suture. Lambdoid suture. Then it is present in parietal. This is parietal bone. We can mark parietal. This is occipital. Occipital. Sagittal suture present between. Sagittal suture present between two parietal bones, and lambdoid suture present between occipital and parietal bone. It is like this. Here is lambda shaped form. This is lambda shaped form. So it is called lambdoid suture. There is lambda form. This is one lambda form. So it is called lambdoid suture. Done. 4 टाइप देखते हैं इसका. 4 टाइप का सूचर क्या होगा हमारे पास. 4 टाइप का सूचर होता है हमारे पास. स्क्वैमस सूचर. Squamous suture. Done. Squamous suture is like this. This is squamous suture. Let's say these are two bones. These are two bones. It is present like this. Done. So here it is present like this, obliquely, and join the bones. This is which suture? Squamous suture. This is squamous suture. Obliquely. Done. अब ये किस बोन के बीच में प्रेजेंट होता है? It is present between temporal and occipital. एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका temporoparietal joint, parieto-temporal joint, या फिर temporoparietal joint. All are true. Temporoparietal
joint. Then it is present with a temporal parietal joint. What is temporal parietal joint? It is present between temporal bone and parietal bone. Wait, इसको भी देखते हैं. So this is our temporoparietal joint. Wait, can enlarge this image. So here we can mark. This is temporal bone. This is temporal bone. Temporal bone. This is lateral side. This is parietal bone. Parietal bone. And this is temporoparietal joint. Temporoparietal suture. This is the present between temporal and parietal. We can mark temporoparietal joint. Done. These are the 4 types. Next is Shyndielesis joint. This is important. Shyndielesis. It is also sutural joint. It is present between first इसका example लेंगे. पहले example लेते हैं इसका. Present between important है. It is present between rostrum of sphenoid. It is present between rostrum of sphenoid and rostrum of sphenoid and which bone? Vomer. देखिए इसके लिए हम मार्क कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए दिस इज आगे की तरफ एक सेप्टम होता है. नोज के अंदर एक बोन होता है. इसको हम बोलते हैं वोमर बोन व्हिच डिवाइड द बोन इन nasal cavity into 2 parts. Nasal cavities, one left and right side. So and there is a bone present in skull is called sphenoid bone, which is present between head cranium. It is called sphenoid. So it is present between gross and there are marking of sphenoid called rostrum, elevation edge. It is called rostrum. So it is present between them. इसको एग्जांपल अभी याद रखना फिलहाल के लिए. वोमर. देन आप दिखता कैसे एक बार दिख लेते हैं इसको. रोस्ट्रम स्फिनोइड दिख कैसे. Done. It is like this. Let's say this cavity. And vomer is present like this. ऊपर से आता है ऐसे. इसमें ऐसे फिक्स होने के लिए. This is Shyndielesis joint. And here it is joint. Here it joint. Then this is vomer bone. Vomer. And this is sphenoid bone. Sphenoid bone. Done. So these are types of sutural joint. 5 types of sutural joint. Done. Plain, serrate, denticulate, squamous, and Shyndielesis. Next type of joint is fibrous joint में category है Gomphosis. Gomphosis. Gomphosis is a tooth joint. It is not sutural joint, but it is a fibrous joint. It is present between tooth and gum, tooth and jaw. Example में लिखें तो tooth and jaw joint.
It is also not movable because fibrous joint है. अब teeth jaw के अंदर move नहीं करता ना, so it is socket like joint. Socket की तरह होता है. It is, we know the socket and tooth. थीकोडॉन में हम पढ़ते हैं in 11th 12th class. थीकोडॉन 11th 12th में ये थीकोडॉन टीथ बोलते हैं, उसमें सॉकेट लाइक प्रेजेंट होता है. सो इट इज प्रेजेंट लाइक दिस. पेंसिल this is socket and here is tooth present. Here is our tooth present. Done. Like this. This is our teeth present in socket. So this is example of Gomphosis joint. Here fibrous tissue present to join it. Tissues always present होंगे joint में ताकि उसे जोड़ सके. Done. This is an example of Gomphosis. Next example is last is Syndesmosis. Syndesmosis. अब यहाँ पर there are two terms similar like ऊपर जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था Shyndielesis. This is Shyndielesis and this is Syndesmosis. There are two different terms. It is a joint. अब इसका पैटर्न देखिए. पहले इसका पैटर्न देखते हैं. Let's say there are two bones, long bones की कैटेगरी लेते हैं. There are two long bones. One is this. Done. And another is this. There are two bones. Done. These are two types of bone present. Two bones. Up there is a fibrous tissue membrane present between them. Fibrous tissue membrane. There is fibrous tissue membrane which connect the two bones. Very long area is covered through this. Done. Very long area is covered. It is fibrous membrane, also called intraosseous membrane. It is fibrous membrane first. Fibrous membrane. Done. And these are bones. So these bones are joined by this fibrous membrane. So it is called syndesmosis. It is present within which where there is a fibrous membrane and two bones are joined longitudinally. Longitudinally two bones joined है. तो इसका example होता है पहले तो radio-ulnar joint between radius and in our hand. In our hand there is radius and ulnar joint present. This side is radius bone present. This side is radius bone present and thumb वाली साइड हमारी रेडियस बोन प्रेजेंट होती है एंड अदर साइड लिटिल फिंगर साइड में हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट होती है. सो देयर इज पैड joint between radius and ulnar joint. It is called radio-ulnar joint. We can say this is this thumb side. This is thumb side. Thumb side में हमारी कौन सी बोन होगी? Radius bone and this is ulna side. Here is ulna bone present. Little finger side. So this membrane present between them. So लिख सकते हैं radio-ulnar joint. उसमें भी middle radio-ulnar joint. There are three joints. अब superior, middle and inferior. इसमें भी middle radio-ulnar joint. And other example is पैर में tibio-fibular joint. Similar. Tibio-fibular joint. Then, so these are fibrous joint categories we have discussed. These all are fibrous joint. Done.
ये सबसे पहले हमने कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन ज्वाइंट पढ़ा, देन आगे हमने जॉइंट्स में फाइब्रस जॉइंट स्टडी करी। फाइब्रस जॉइंट में ये चीजें थी, सूचरल जॉइंट, पहले सूचरल जॉइंट पढ़े 5 टाइप के, देन हमने गॉम्फोसिस एंड सिंडोसिस इसको डिस्कस किया। दीज आर फाइब्रस जॉइंट। अब पहले एक बार इंटरमैक्सिलरी और इंटरनेजल सूचर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा वी कैन मार्क this is these two are nasal bone, one is this bone, this is one nasal bone we can mark, and this is another nasal bone. So two nasal bone is present is plain suture, and one is this is example, this is maxilla bone. We can draw this is maxilla, one maxilla, done, and here is this side another maxilla. So between two maxilla is also plain joint, plain sutural joint. Set of extend हो गया, done. चलिए, this is also example of this is maxilla bone, maxilla, these are this is nasal bone, this is nasal bone, nasal bone, and the suture between them, this is one and this is one or two. These are plain sutural joint, plain sutural joint, done. This is also plain sutural joint. So these are the sutural joint. Now come to the category of second type of joint is called cartilaginous joint. This is the thing we have got. Blood supply and sutural fibrous joint हमने complete कर दिया. Next type is cartilaginous joint. कार्टिलेज जॉइंट इजी है, ज़्यादा टाइम लेगा. कार्टिलेजिनस joint, cartilaginous joint, done. Cartilage joint, they are slightly movable, slightly movable, done. So इसमें there are two categories defined. We have types में, इसमें भी types होते हैं, ज़्यादा नहीं है, इसमें दो ही है बस. One is primary cartilaginous joint, primary cartilaginous, yes, and another is secondary cartilaginous, secondary cartilaginous. Primary cartilaginous पर क्या है? Of they are not permanent joint. Primary joint are not permanent. They are only temporary because after some time they ossify. They are temporary. Temporary joint because they ossify after some time. Some time. Done. And these are secondary cartilaginous. They are permanent. They are permanent.
बिकॉज दे डू नॉट ऑसिफाई. ऑसिफिकेशन मतलब उसमें मतलब मिनरलाइजेशन हो जाता है, उसमें मिनरल डिपॉजिट होकर बोन बन जाता है कंप्लीटली. सो दे आर टेम्परेरी. they are they do not ossify. Done. So these are called primary and secondary joint. अब इसमें एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? तो अब एक बार इनका पहले एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लीजिए इसका कैसा होता है. अब कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ पे जनरली हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट हो जाती है. यहाँ पे कार्टिलेज की बात करते हैं, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. कार्टिलेज अभी देखेंगे हम आगे. हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट. डन. अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं. इसके स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से.
लाइक दिस इज अ जॉइंट। इसका नाम एक मिनट, हाँ इसका नाम करते हैं अब देखिए, दिस इज फाइबर्स। फाइबर्स कंप्लीटली प्रेजेंट है, फाइबर्स प्रेजेंट। अब फाइबर्स तो ये फाइबरस जॉइंट वाला कैटेगरी आ जाती है कुछ कुछ। अब इसमें क्या होता है, इस वाले में देखिए, ये तो प्राइमरी था, जो बीच में फाइबर्स आ गए तो धीरे धीरे फाइबर्स क्या होंगी, ऑसिफाई कर जाएंगी आफ्टर सम टाइम एंड दे बिकम द बोन कंप्लीटली, कंप्लीटली इमूवेबल। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें कंप्लीटली ऑसिफिकेशन नहीं होता। ये कैसे नहीं होगा वो देखिए, इसको मिलाया हमने, यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्टिलेज प्रेजेंट हो, यहाँ पे पहले हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है पहले। अब फाइबर्स लगेंगे बीच में, तो जब हाइलिन कार्टिलेज बीच में आ गई है ना, तो बीच में वो कंप्लीटली ऑसिफाई नहीं कर पाएंगे वो। नाम करते हैं, दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड दीज आर फाइबर्स, फाइबर्स डन। सो ये होता है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे कौन से जॉइंट है जो कुछ टाइम बाद क्लास ऑसिफाई हो जाते हैं। बेसिकली हम यूज कर सकते हैं एपिफाइजल प्लेट, यहाँ पे एपिफाइजल प्लेट आज का हमारा एग्जांपल, बिकॉज आफ्टर सम टाइम एपिफाइजल प्लेट्स, एपिफाइजल जो हमारी प्लेट थी उसमें बोन में, वो ऑसिफाई हो जाती थी, तो यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एपिफाइजल प्लेट्स ऑफ बोन्स, तो ये हमारा प्राइमरी कार्टिलेज हो जाएगा, प्राइमरी कार्टिलेज। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे कर सकते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट वाला इंक्लूड करना है, सारे नहीं। अब ये कौन सा जॉइंट होता है बताते हैं। देखिए कोस्टो का मतलब होता है रिब, कोस्टो इज फॉर रिब, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, मींस कार्टिलेज। So in rib cage, when ribs connect with the sternum, there is some cartilage portion present between them, which join the one side from the rib and one side with the sternum. It is like this. This. Let's say this is the sternum bone in the center, and from both sides, these are the ribs, coming ribs. Done. So there is some cartilage portion present between them, which join the sternum and rib. Done. This is called costochondral joint. This is costochondral joint between rib and cartilage. Costochondral joint. These are ribs, and this is sternum. Sternum is center में, chest के बोन में, chest bone. Done. और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे हमारे बेसिकली मिड लाइन जॉइंट्स आर बेसिकली, मिड लाइन जॉइंट्स कौन से होते हैं, one joint is manubrium sternum. Sternum has many parts. Upper part is manubrium, then body, and the point is pointed end is called xiphoid process. We can draw. Sternum is present like this. Sternum is like this. One portion of sternum, second portion, done, and the third pointed portion. This is sternum. This is manubrium, manubrium. This is body, and this point is called xiphoid process. Xiphoid process. So one example of this joint is this manubrosternal joint.
एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैनी ब्रियो स्टर्नल जॉइंट, मैनीब्रम को स्टर्नम के साथ जोड़ने वाला जॉइंट, स्टर्नल जॉइंट, दिस इज मैनीब्रो स्टर्नल जॉइंट, ये जो है। और भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस में टू प्यूबिक बोन्स, pubic symphysis, midline structure joints are secondary, symphysis, intervertebral disc joint, joint between two intervertebral discs, intervertebral joints between two discs, then तो ये एग्जांपल होते हैं हमारे कार्टिलेज जॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद मूव करते हैं, then these are cartilaginous joint, इसमें लाइन डाल देते हैं। After this we move to the synovial joint. Synovial joint, तो साइनोवियल जॉइंट हमें पता है मूवेबल है, तो पहले से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट पहले ड्रॉ करते हैं। This is structure of synovial joint. Here is fibrous band present between which is called, between surfaces is called fibrous capsule. This is fibrous capsule which cover the structures. Then another important, there is a membrane also present here. This membrane is called synovial membrane. This synovial membrane present extend whole joint surface, but except these bone surfaces are called articulating surface. The bone surface have cartilage. Which cartilage? Hyaline cartilage. Synovial membrane extend all surfaces, but except bone surfaces, cover the whole capsule. And this is hyaline cartilage. And then finally, done, done. So, and there last thing, allwhere, everywhere, there is one fluid present which is called synovial fluid. Here is synovial fluid present. All area. This whole area is covered by synovial fluid. Fluid present between them to prevent friction. Friction को reduce करने के लिए. So this is joint, synovial joint. मार्किंग कर देते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ कैप्सूल है, डन। उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर क्या है, बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दीज आर कॉल्ड आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन, आर्टिकुलेटिंग surfaces which take part in formation of synovial joint.
Then after this is hyaline cartilage. Hyaline cartilage, and this is synovial fluid. Synovial fluid. रोल हमें पता है क्या क्या होता है किसका. अब कैप्सूल हो गया, उसमें मेम्ब्रेन, फ्लूइड, हाइड्रोजन कार्टिलेज, बोन्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने मार्क करी. दीज आर द पोर्शन. अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स. सो इसमें भी कई टाइप्स हैं. सबसे पहले आता है हमारा, जैसे प्लेन हमारा कौन जॉइंट था, जैसे हमारा प्लेन फाइब्रस जॉइंट था, ऐसे प्लेन साइनोवियल जॉइंट भी होता है. सो फर्स्ट टाइप इज प्लेन साइनोवियल जॉइंट. प्लेन साइनोवियल जॉइंट कैसा होगा? द टू बोन्स कैन float on one another. There is a one surface bone, one surface of bone, and another bone can float on another. This is called plain synovial joint. One bone can float on another bone. One bone float on another bone. Another bone. So इसमें हमारा आ जाता है कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स. Basically joint between carpal bone, intercarpals, intercarpal joint. कार्पल बेसिकली हैंड में जो रिस्ट जॉइंट होता है, रिस्ट में जो कार्पल्स होते हैं ना, this intercarpal joint. And another example is sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint is, we know the sternum bone present, and here is a very very prominent bone called clavicle bone in neck. So joint between clavicle and sternum is called sternoclavicular joint, and it is example of plain synovial joint. The next category is clavicle bone. जानते थे, clavicle is also called as sigmoid bone या फिर beauty bone. clavicle beauty bone, and this is sternum. So joint between them. Next is next next type of joint is hinge joint. कॉमन लेते हैं, hinge joint. यहाँ पे ले लेते हैं hinge जी, hinge joint. अब hinge joint से क्या समझ आता है? Hinge joint is like gate connected to a certain thing. It is like this movement, like gate movement, like this. This is gate movement. It is attached to a certain thing. This is attached point, and this is movable one. So gate is like this. This is called hinge joint. Hinge joint में क्या include करेंगे? Hinge joint can, इसमें example आ जाए. Hinge joint is like gate. This is
let's say gate, and this is movable. Hmm. This gate can move like this. It move like this. So this is hinge joint. इसमें include क्या कर सकते हैं हम? Basically elbow joint we know, and knee joint, पैर में knee joint. One joint can be example of more than one type of joint. Remember, one can एक एग्जाम्पल दो जॉइंट का टाइप हो सकता है. ऐसा नहीं कि एक फिक्स हो गया कि वो इसी का एग्जाम्पल हो. एक से ज्यादा का एग्जाम्पल पॉसिबल है. नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज पाइवट जॉइंट. Pivot joint is like this. Let's say this is one pole like structure. Done. This is one ring या कुछ ऐसा, and it is rotating about this point. It is rotation. One thing is rotating around another axis. This is common axis, and one thing is rotating like this. Complete rotation. Type layer. इसको बोलते हैं pivot joint. Rotation around axis. इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा atlantoaxial joint. What is atlas and vertical axis? These are vertebrae. Atlantoaxial joint. Axial joint. This is first vertebra and second vertebra. This is first vertebra, and this is second vertebra. So ये दोनों इस टाइप की मूवमेंट कराने में हेल्प करती है गर्दन में. This is pivot joint. This is pivot joint. Done. एक एक्सिस पे गर्दन मूव कर रही है ना, तो इसे pivot joint बोलते हैं. Vertebrae. Next is hinge joint हो गया. Ball socket ले लेते हैं. Next is ball and socket. This is the common joint we have learned in 12th. Ball and socket. Ball socket obviously know. One surface is like ball and another surface is cap. Catch करने के लिए cap like. One is very convex, ball like surface, and cup like. One surface is ball like and another is cup like, and another surface is cup like. एक cup जैसा होगा, एक ball जैसा होगा, like this. If we draw, let's say this is ball. This is ball like surface and another surface is cup like to catch this, to cover this. Done. So this is example of ball socket. One surface and this is second. This is second and this is first. Done. So this is ball like joint, ball socket. So हमने अब तक कितने कर लिए?
देख लेते हैं एक बार। अगर हमने 4 करें, साइनोवियल, प्लेन, हिंज, पाइवट, बॉल। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, इसी के साथ में लिखेंगे, इसमें हम कर देते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं, बॉल तक हो गए हमारे। अब इधर ले लेते हैं, इसके साथ में लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट इज कॉन्डाइलर जॉइंट। Condylar joint. Condylar joint is also like this. One surface is convex and one surface is concave, like ball, but some modification. यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो लाइन, one surface is convex and other is concave. But यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट होता है, like this. But it is divided into two. यहाँ पे लिख लेते हैं, but surface जो convex surface है is divided into two condyles, like this. इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, let's say this is one bone, done. This is one bone and it has condyle, but it is divided into two condyles, like this, and one surface is concave, sorry, below, done. So here we can say two condyle present. Two condyles present, done. तो एग्जांपल में लेंगे, क्या एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, पहले knee joint. Remember we have seen knee joint in hinge joint, but one joint can be example of more than. This is knee joint. One is this tough example slightly, temporomandibular joint. अभी देखते हैं इसको, temporomandibular joint. अब ये क्या होता है देखते हैं अभी, एक मिनट देखिए, इसको बोलते हैं temporomandibular. ये रहा, देखिए, this is temporomandibular joint. This is mandible, we know. This is mandible, done, and this is temporal bone. So this joint is called temporomandibular joint. इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएमजी बोलते हैं. Temporomandibular joint. Then it is example of which joint? Condylar joint. चलते हैं वापस, हम कर रहे थे condylar joint. Done. तो ये जॉइंट हो गए, इसके एग्जांपल दो, एटलीस्ट एक दो तो हमें याद रखना ही पड़ेगा हर किसी का. ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, बट वी हैव कवर टू कवर. डन.
यू हैव टू द नेक्स्ट इज एलिप्सॉइड जॉइंट, बस खत्म होने वाली जॉइंट एलिप्सॉइड सैडल जॉइंट ऑल आर सैडल साइनोवियल जॉइंट ऑल आर साइनोवियल जॉइंट, जितने पढ़ रहे हैं 6 कैटेगरी ऑल आर साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल वैरायटी ऑफ डैश जॉइंट, कैसे बोलेंगे पूरा साइनोवियल वैरायटी ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल वैरायटी ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट। देन अब एलिप्सॉइड में होते हैं यहाँ पे सरफेस होगा तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, बट यहाँ पे एलिप्सॉइड सरफेस बोल देते हैं, एलिप्टिकल सरफेस, एलिप्टिकल surfaces present, वो चीज सिमिलर है, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड वन सरफेस कॉनकेव, ऑलमोस्ट कॉन्डलर जैसा ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे बस एक सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा एलिप्सॉइड सरफेस है, एलिप्टिकल एलिप्टिकल सरफेस प्रेजेंट, लिख लेते हैं यहाँ पे लाइन, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, डन। उसके बाद लिखेंगे एग्जांपल इसका, एलिप्टिकल सरफेस एग्जांपल इसमें आ रहा है, जस्ट ज्यादा नहीं है, रिस्ट जॉइंट एंड अदर इज विच जॉइंट, example of atlanto-occipital means atlas vertebra, first vertebra and occipital joint, these are occipitals, occipital condyles, इनको हम condyle बोलते हैं, atlas। यहाँ पे क्या होता है, ये जो नीचे से निकले हो ना ये, इनको बोलते हैं condyle, this is occipital condyle, we have learned in 12 dicondylic skull, so this is example of, this is condyles of skull, condyles of skull, done। यहाँ पे रहते हैं wrist joint and atlanto is atlas vertebra, first vertebra की बात कर रहे हो, atlanto condylar joint, atlanto occipital condyle, occipital कहते हैं, atlanto condylar joint, condylar joint, atlanto condylar joint, then occipito condylar भी बोल देते हैं ऐसे, पूरा लिख लेते हैं, चलो मैं पूरा लिखते हैं, पूरा ही बोला जाता है, atlanto occipito condylar joint, condylar joint, atlas मतलब first vertebra, this means atlas means first vertebrae and this is condyles, occipital condyles, occipital condyles, तो इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं atlanto occipital condyle, and the last one is, बस लास्ट है 7th, this is called saddle joint, this also we have learned, saddle joint, saddle joint। अब सैडल जॉइंट में भी बस थोड़ा सा सरफेस का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स कॉनकेव होते हैं, बट यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं, देखिए लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ, इस टाइप से होता है, ये बोन आ रही है ऊपर से, सरफेस पहले तो इसमें होगा कॉनकेव और इसी में कॉन्वेक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही बोन में दोनों सरफेस होता है, ऐसे दूसरी बोन भी होगी, पहले उसमें कॉनकेव होगा, फिर उसी में कॉनकेव कॉन्वेक्स भी होगा, तो यहाँ पे दोनों सरफेस एक ही बोन में होते हैं,
थोड़ा टेढ़ा नहीं होता एक्चुअल में, टेढ़ा नहीं है, दोनों साइड से कवर होता है पूरा। डन। इस साइड से लो तो यहाँ पे दोनों सरफेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस। डन। तो इसका बस एक एग्जांपल याद रखना है हमें फिलहाल के लिए, बाकी ये हम पढ़ेंगे आगे मिडल ईयर में जब हेड एंड नेक कवर करेंगे बहुत बात, वो भी बात की बात है। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल सिंगल कार्पल एंड दिस मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब। बेसिकली कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कार्पो लिख लेते हैं, लास्ट इज कार्पो मतलब कार्पल बोन्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। देन कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट थंब का होता है बेसिकली फर्स्ट वन। दिस बोन इज मेटाकार्पल, ये जो होती है इसके नीचे होती है कार्पल, तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। डन। नॉट फेरेंजियल, ठीक है। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ जॉइंट्स। डन। देख लेते हैं एक बार सारे जॉइंट देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले हमने बोन कॉम्पैक्ट बोन वगैरह पढ़ा, फिर फाइब्रस जॉइंट में सूचरल जॉइंट पढ़े, प्लेन सेरेट डेंटिकुलेट स्क्वैमस शिंडालिसिस। इनके एग्जांपल्स पढ़े, लैम्डॉइड सूचर, डेंटिकुलेट एग्जांपल सेरेट का सेजिटल, प्लेन का इंटर मैक्सिलरी इंटरनेजल, शिंडालिसिस का रोस्ट्रम ऑफ सिवेनॉइड एंड वूमर बोन। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोम्फोसिस टूथ वाला सिंडेस्मोसिस, दो बोन्स के बीच में फाइब्रस मेम्ब्रेन, मिडल रेडियल नर्व एंड ट्यूबुलोफिब्रिलर जॉइंट। उसके बाद में कार्टिलेज जॉइंट पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में डायरेक्ट दो बोन्स के बीच में फाइब्रस होते हैं उसमें, और उसमें सेकेंडरी में बीच वाले हाइलिन गार्ड होती है। इसमें एपिफाइजल प्लेट्स एंड कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। सेकेंडरी में हमने पढ़ा मिड लाइन स्ट्रक्चर, मैनिबरोस टर्मिनल जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद सैंगल जॉइंट में प्लेन, प्लेन का स्टर्नोक्लेविकुलर इंटरकार्पल जॉइंट, देन हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल सॉकेट, कॉन्डाइलर जॉइंट, ellipsoid and saddle joint. These all are joints, example and points. Then next we will cover the some cartilages, cartilage types and एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बस ज्यादा देखना है इसमें हमें, ज्यादा नहीं पढ़ना होता cartilage में। Next is cartilage. कार्टिलेज क्या होती है? इट इज इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब हार्डनेस के टर्म्स बात करें तो बोन से तो कम हार्ड होती है, बट अगर कंपैरिजन करें स्किन से तो स्किन से ज्यादा हार्ड होती है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, इट इज इंटरमीडिएट स्टेज, इट इज intermediate between bone and skin। किसके टर्म्स में? हार्डनेस के टर्म्स बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, टर्म्स ऑफ हार्डनेस। तो ये तीन कैटेगरी में होती है हमारे पास,
कार्टिलेज होती है। इसमें टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास टाइप्स में हाइलिन, हमने अभी पढ़ा मोस्ट कॉमन होता है, मोस्टली प्लेसेस पर हाइलिन ही प्रेजेंट होता है बॉडी में। हाइलिन, इलास्टिन एंड वाइट फाइब्रस। अब उसके टर्म्स बात करें स्ट्रेंथ के टर्म्स में, तो दिस इज मोस्ट टफ, दिस इज मोस्ट टफ, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज लीस्ट, लीस्ट स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज इंटरमीडिएट। मतलब बीच में आते हैं दोनों के। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स याद करते हैं, थोड़े थोड़े हम एग्जांपल देखने इनके कौन सा कहाँ होगी, वो एग्जांपल थोड़ा सा याद करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आता है हाइलिन, हमने कहाँ का देखा भाई, एक्स एपिफाइट्स ऑफ बोन, बोन्स के एंडिंग पे, एंड्स ऑफ बोन्स। दूसरा कॉस्टल कार्टिलेज जो कार्टिलेज होती है स्टर्नम एंड रिब केज के बीच में, कॉस्टल कार्टिलेज। डन, ये दो एग्जांपल हो। दूसरा थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, रिमेंबर थायराइड कार्टिलेज में दो टाइप की होती है। थायराइड, एक तो थायराइड पूरी मेन कार्टिलेज है, वो तो हमारी हाइलिन की, उसके बाद होती है एपिग्लॉटिस, वो होता है हमारा इलास्टिन का। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं आप इलास्टिन में, इलास्टिन के एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो आता है हमारा, सिंपल बात करें हमने, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज कवरिंग ऑफ नॉर्मली थायराइड कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस एयर पैसेज की कवरिंग होती है, एयर पैसेज का गेट। डन, उसके बाद होता है हमारा ईयर कार्टिलेज, एक्सटर्नल ईयर, ईयर कार्टिलेज। कौन सा? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर। डन, उसके बाद आते हैं इस पे। अब इसके भी छोटे से एग्जांपल हैं, एक दो हैं, इसके भी होते हैं एग्जांपल। पहला होगा इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा जॉइंट आता है आगे, उसके अंदर आता होगा सेकेंडरी कार्टिलेज के अंदर। प्यूबिक सिम्फाइसिस बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स, जो कॉक्सल बोन्स होते हैं हमारे। उसके बाद आता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी हमारा व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क। डन, तो ये हो गए हमारे कुछ कार्टिलेजेस के एग्जांपल। डन, सो दीज आर द पोर्शन वी हैव टू कवर, वी हैव कवर। डन, बोन्स, देन उसके बाद हमने डायरेक्ट जॉइंट्स पे स्टार्ट किया था, फाइब्रस ऑल टाइप्स, और ये थोड़ा सा हमने लास्ट में कार्टिलेज का देखा। डन, तो नेक्स्ट टाइम विल कवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।